Ma'am, start. Saleem, and today I will be discussing with you evaluation of cardiovascular system. Okay, so this is the obviously clinical examination, and ideally it should be done on the bedside, but we know that due to this COVID emergency, we have to do it. Excuse me, मैम आपकी आवाज बिल्कुल स्लो हो रही है अभी. ठीक है, इतना लाउड जी, बात है. अब बेहतर हुई. चलें. So before starting the evaluation of cardiovascular system, so I would like to give a brief overview of cardiovascular diseases. We know that the cardiovascular disease they cause significant death worldwide in children, and these can be congenital or acquired. In developed countries, congenital heart disease is the main cause of death, but congenital disease is more common in the developed countries, but in developing countries, both congenital as well as acquired diseases, heart diseases are common. Okay? So they can be simple if the defect is isolated, or complex if there are multiple cardiac defects. And they are also associated with certain syndromes. So we will discuss these syndromes in the next slides. So before doing the cardiovascular examination or any other examination, one should take a very good history, because history should be good, and then we do examination, and collectively we make the differential diagnosis. So comprehensive history is extremely important. From cardiovascular point of view, perinatal history is important. For example, exposure of infection. Now, what infection can cause cardiac problem in the newborn? Maternal rubella infection is an example. It can cause patent ductus arteriosus and premature delivery. Right? There are certain medications or substance of abuse that can affect the newborn or even the fetus adversely, especially in the first trimester, which is also called the period of organogenesis. Then maternal illnesses, for example, gestational diabetes or known type 2 diabetes. These mothers, the infants of these mothers are at high risk of certain congenital cyanotic heart diseases. For example, TGA or transposition of great vessels or great arteries is more common in infants of diabetic mothers. Similarly, if the mother has SLE, the baby is at risk of developing congenital heart blocks, and this can lead to serious complications, even hydrops fetalis. Okay? So history taking is very important. So if the mother is diabetic, if mother is having systemic lupus erythematosus, the pregnancy will be very, very high risk. Then any problem related to labor and deliveries. If there is history of perinatal stress or asphyxia, it means that at the time of birth, the baby has suffered hypoxic ischemic injury. And this hypoxic ischemic injury is not only to the heart, but also to the brain, kidneys, liver, all the vital organs, and the baby will be having consequences of this perinatal asphyxia. Timing of first presentation of the symptom is also important, because if the baby is having congenital cyanotic heart disease, they present early. When the ductus arteriosus closes, they present soon, just few hours after birth. On the other hand, acyanotic congenital heart disease, they present a little bit later, after few months of life. So timing of first presentation is also very important. Then gestational age, I have already mentioned that PDA is more common in premature babies. So this is मैम आपके बैकग्राउंड पे कोई हवा चल रही है या कोई साउंड आ रहा है? एसी चल रहा है. स्टूडेंट्स भी कंप्लेन कर रहे हैं. अच्छा, आप होल्ड रखिए, मैं ये एसी बंद करवाती हूँ. ठीक है जी. हेलो जी, अब देखिए, अब ठीक है, बंद करवा दिया. बिल्कुल, ये अब क्लियर है. चले, मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ. ओके. So we were discussing about the perinatal history. So it's very important to discuss about the history of infection in the mother and any illness in the mother, like diabetes and SLE, asphyxia at the time of delivery, timing of presentation, and then the gestational age. Now coming to the second component, growth and development. For example, if the baby is having congenital heart defect, whether it is cyanotic or acyanotic,
he will not be able to weight gain properly. He will remain failure to thrive. And why this happens? Because of the symptoms of cardiac failure, the baby will remain tachypneic and will not be able to take feed properly. As a result, the weight of the baby will not increase and he will remain below the percentile charts for his age group. There will be gross motor delay in the gross motor development as well. Now, when we ask about the feeding history, the mother can give you history of poor feeding. For example, history of fatigue during feeding, history of lethargy or vomiting. And when the baby is in cardiac failure, for example, if a baby has a large VSD or ventricular septal defect, he will not be able to take feed properly because of the increased respiratory rate and you may get history of sweating during feeding or even cyanosis during feeding. So feeding history is also very important. Then there may be breathing difficulties, as I have already mentioned. They may remain tachypneic. There may be signs of respiratory distress like nasal flaring, chest retractions. There may be orthopnea or paroxysmal nocturnal dyspnea. These are the symptoms which can be seen in older children, not in the newborns, right? And dyspnea on exercise, feeding, and I have already mentioned. And older children, they may avoid playing because when they play, the cardiac failure become more worse, and that what we have to at or then not due to cardiac acrocyanosis means and cyanosis can as a result of hypothermia. ठीक है, when temperature में होगा तो peripheral cyanosis in tips of the blue. It doesn't mean that blue is there are a lot of technical issues, so we will resume. So we were talking about the history of breathing difficulties. So the child may have respiratory distress with signs of, respiratory distress, nasal flaring and chest retractions, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, and dyspnea on exercise. History of cyanosis. History of cyanosis can be at rest. This is very important. If the baby has cyanosis at rest, it means he is having a cardiac issue or a respiratory issue and he needs medical attention urgently. On the other hand, if there is peripheral cyanosis or cyanosis of the fingertips, which is also called acrocyanosis, so it can occur as a result of hypothermia in cold weathers, but the child even then needs evaluation. So what are blue spells or intermittent cyanotic spells? These are feature of tetralogy of palate or any cyanotic congenital heart defect. What happens when there is increased mixing of the oxygenated blood with oxygenated blood? So there is hypoxemia and the baby becomes cyanosed. And with these hypoxemia, when the oxygen saturation drops, basically the oxygen delivery to the brain and vital organ becomes compromised and the baby develops gasping breathing, even if he or she can develop seizures or fits. Okay? So this is called blue spell. This is also called tet spell. Okay? And this is a medical emergency. One has to take the patient urgently to the hospital. History of chest pain is rare in younger children because they are unable to communicate their problem properly. But adolescents, they can history of chest pain, and then we can evaluate them. Family history of cardiac disease is also very, very important. We know that the congenital cardiac defects, they don't follow any Mendelian pattern of inheritance. But if there is a baby with congenital heart defect in the family, the occurrence of congenital heart disease in the subsequent pregnancies becomes more. So there is increased incidence of having congenital heart disease in the subsequent pregnancies. On the other hand, there are certain acquired heart problems, for example, first-degree heart block in the relative, or the history of myocardial infarction in the relative. So these are also very important.
An early or sudden death in the family is also a very, very important clue for congenital heart defects. I am giving you an example of long QT syndrome. This is a syndrome in which there is arrhythmia happens and there is history of sudden deaths in the family in the younger people. So if you are getting such history, then you have to evaluate the child very thoroughly and get an ECG done. Now, come to the general examination after the history. So you have to take the perinatal history, the growth and developmental history, feeding history, history of cyanosis, spleen and family history. Now come to the general examination. Whenever we examine the patient, we have to look at the general appearance. For example, for a 5-year-old child lying on bed with no dysmorphic features, having cyanosis and cannula on the right hand. So this is a brief introduction of the patient, and then we proceed towards the examination. I have given you examples of Down syndrome. For example, if the patient has Down syndrome, he is at risk of developing certain cardiac defects. For example, ventricular septal defect or VSD is common occurrence in patients with Down syndrome. Similarly, they can also have AVSD, that is atrioventricular septal defects. They can also have tetralogy of Fallot. Okay? So if you see a patient with features of Down syndrome that is having upward slanting eyes, depressed nasal bridge, microcephaly, so you have to do the cardiovascular examination very, very thoroughly. The second syndrome is Turner syndrome. We know that it is present in the females, and the features of Turner syndrome include short stature, webbing of the neck, widely spaced nipples. So if you are getting such patient, give a time, good enough time for cardiovascular examination, because there are certain cardiac problems which are common in these patients. For example, coarctation of aorta is very common in patients with Turner syndrome. They can also have problems of mitral valve. Then Marfan syndrome, on the other hand, they are very tall and they also have problems like aortic dissection and mitral valve prolapse. So they are at risk of developing cardiac issues. So this is about the general appearance, whether the patient has normal features or features of certain syndromes. Then accurate measurement of the height and weight and head circumference is also very important, because in the history previously I have mentioned, because of the symptoms of cardiac failure, they are unable to take feed properly, and as a result their height and weight are not up to the mark and they remain below third centile. So this will also give you a clue that the child is having some chronic issue. And what we examine in the hands, we look for clubbing, and clubbing basically has 4 grades. Grade 1, there is a fluctuation of the nail and the nail bed. Grade 2, there is obliteration of the angle between the nail and nail bed. Grade 3 clubbing में there is drumstick appearance of the fingers, tips, and grade 4 clubbing is hypertrophic pulmonary osteoarthropathy. You can get these grades in the books, but one has to look for clubbing. I will show you how clubbing looks like in picture. Peripheral cyanosis again is less important from cardiovascular point of view, but one has to look for it, okay, whether the cyanosis is central or peripheral. Now, if we are looking at a patient of known congenital heart defect, take example of tetralogy, and the patient presents with signs of cardiac failure, then we have to look for the signs of infective endocarditis. And what are these signs? Splinter hemorrhages on the nails, ostal nodes, and general lesions. These are the painless Palmer matrices. Okay, in the face, we have to look for xanthelismas. Xanthelismas are basically cholesterol depositions, and they are yellowish deposition of cholesterol over the eyelids, and they give you a clue that the patient is having high cholesterol level or hypercholesterolemia. On the other hand, severe anemia itself can lead to congestive cardiac failure. So if the patient is severely anemic, he or she can go into cardiac failure. So in the eyes, we have to look for anemia also. Now, what we will look in the mouth, decaying teeth. Decaying teeth is a very, very high risk for development of infective endocarditis in patients with known cardiac effects. So dental hygiene should be maintained properly. In mouth, we have to look for the cyanosis of the tongue and lips, and there are dusky mob flush facies in patients with mitral valve problems. These are called mitral facies. Now, this is the child. Here you can see central cyanosis. Okay? The tongue is blue and the lips is also blue, right? So this is central cyanosis.
Uh, there are back with there are certain murmurs. Murmurs are basically abnormal heart sound. We will talk about murmurs later on. But abhi ke liye, you can just understand that there are certain murmurs which radiate to the back. For example, murmur of patent ductus arteriosus, murmur of coarctation of aorta, murmur of severe pulmonary stenosis. They all radiate toward back between the interscapular region. So what are the signs of cardiac issues in the abdomen? You may get congestive cardiac, and in congestive cardiac failure, you may get hepatomegaly. Okay, congestion of the liver will be enlarged. It will be soft in consistency because of congestion. You may get splenomegaly as a feature of infective endocarditis, and then the edema due to cardiac failure become more marked, or anasarca, it involves the whole body. You may get evidence of fluid in the abdomen in the form of ascites. Here you can see lower limbs. Lower limbs you can see edema, clubbing of the toes, and one should ask about rectal cyanosis in the lower limbs also. Okay, now come to the cardiovascular examination. This was all about the general appearance and history taking in a case of cardiovascular disease. Now we will talk about examination of pulse, blood pressure, JVP, and precordium one by one. JVP is the venous pressure. Okay, so it's first of all examination of the pulse. Okay, this is same as adult and can be examined under the headings of rate, rhythm, volume, character, and comparison of pulses. So first of all, we should know what is the normal heart rate for children. Unlike adults, there is no fixed value for children. There are different ranges of heart rate in different age groups. For example, if in newborns, the normal or average heart rate is 120 to 140 beats per minute. Average pulse rate, on the other hand, in older children decreases to 80 to 120. So, if a child who is 12-year-old, 120 will be tachycardia for a 12-year-old. For a newborn, it is normal. So one has to look at the age of the patient and then correlate whether the heart rate is normal or not. Now, what is the definition of tachycardia for these different ages? If the heart rate is 200 or above in a newborn, then it will be labeled as tachycardia. If the heart rate is 150 or more in infants, infant means from the age of 1 month to 12 months. So if in this age group, if the heart rate is more than 150, it will be labeled as tachycardia. And in elder children, that is 10 and above, heart rate more than 120 beats per minute will be taken as tachycardia. Okay, so this was all about the heart rate. Now we have to see whether the pulse or the heart rate is regular or irregular, because irregular pulse may indicate certain arrhythmias and they have to be picked on time. So whether we have also looked for the specific character of the pulse, like whether the pulses are bounding or they are low volume, and then we have to note for the decreased pulses in the extremities. For example, if the patient in cardiac failure, the stroke volume will be less, and there may not be transmission of cardiac impulse to the peripheries. As a result, the pulses in the peripheries will be weak. Radiofemoral delay is a feature of coarctation of aorta, so one has to compare the radial and femoral pulses in order to find out whether there is radiofemoral delay or not. Okay, this is the pictorial representation where we have to palpate certain arteries. Just on the lateral side of the temple, we can feel temporal artery. Here, just in front of the sternocleidomastoid muscle, you can feel the impulse of carotid artery. And one artery, carotid artery, should be palpated at one time because bilateral palpation can lead to syncope. This is the area that is the cubital fossa where we can palpate brachial artery. Then you can slightly flex the wrist, and on the just above the radius, you can feel radial arteries. Okay, this is the area that is the inguinal area for palpation of femoral artery. Popliteal artery will be palpable in the popliteal fossa, posterior tibial just behind the medial malleolus, and dorsalis pedis artery between the first and second metatarsals. So one should know where we have to palpate these arteries. Okay. Now, as we have talked that the pulses can be of low volume and high volume. So what are the differentials if we are getting bounding pulse or large volume pulse? So large volume pulse or bounding pulse can occur in cases of aortic incompetence, in cases of patent ductus arteriosus,
in AV fistulas and persistent truncus arteriosus. On the other hand, small volume pulse or weak pulse can occur in cases of cardiac failure, pericardial effusion, when because of this pericardial effusion, the heart is not able to pump properly, constricted pericarditis, same reason, and in the lower limbs in coarctation of aorta. When there is coarctation, then the transmission of blood to the lower limb will be compromised and we will get small volume pulse in the lower limbs. Okay. After the pulses, we have to know how to take blood pressure and what are the different ways of taking blood pressure. First of all, we should know that blood pressure should be measured in the arms as well as in the legs. So if a child comes to you, so we cannot just take blood pressure in a single arm and then accordingly we can say if the blood pressure is normal or abnormal. We have to take the blood pressure in all four limbs in children, and the size of the cup should be appropriate because what is the appropriate size of the cup? It should cover 2/3 of the upper arm or leg, and it is important to record the width of the cup also. Okay, because if the size of the cup is small, it will give you falsely high blood pressure. And if, on the other hand, if the size of the cup is large and it is covering more than 2/3 of the upper arm, it will give you falsely low blood pressure. So it's very important that the cup should cover 2/3 of the upper arm. And blood pressure in children is varies with age and closely related to the height and weight of the child. So in children, we cannot say, for example, for adults, we can say that average blood pressure, average normal blood pressure for an adult is 120 by 80 millimeters of mercury. But in children, we cannot say that. So we have to take the blood pressure and then we have to plot this blood pressure on percentile chart, which are according to the height and weight of the patient to see whether the blood pressure is normal or high or low. Right? So 120 and 80, there's nothing like 120 or 80 in children. 120 and 80 can be high for a 2-year-old and it will be normal for a 14-year-old. Right? So we cannot just take readings from इस तरह से कोई fix नहीं कर सकते बच्चों में. Okay, so ये आपको बता रहे हैं कि width कितनी होनी चाहिए. 40% of the arm circumference जो है वो कवर करे और जो है आपकी जो लेंथ है वो जैसे कहा गया कि 2/3 of the arms या 80 to 100% of the circumference को कवर करे blood pressure. Different size के cups available हैं for pediatric age groups, like we use 3 size. There one for the newborns, for infants, and the third one is for the child, big children. ठीक है. जबकि जो adolescents होते हैं, that is up to 12 years and above, उनमें हम adult size का use कर सकते हैं. Now, examination of JVP. It is of little use in infants because infants have a very small neck, so it's very difficult to visualize the pulsations of jugular pulsations in these children. But in older children, it may provide information about the central venous pressure and right atrial pressure. So venous pulsality is lost in obstruction of superior vena cava. ठीक है. So कैसे करते हैं इसको measure? आप express as vertical height from the sternal angle to the zone of transition of this. You can see videos in the YouTube also. So express as vertical height from the sternal angle to the zone of transition of distended and collapsed JVP. First of all, patient को आप लेटाएं 45 degrees के ऊपर और फिर आप जो jugular pulsations हैं उसको आपने visualize करना है और फिर आपने 2 scales लेने हैं. एक scale आपने रखना है vertically on manicum sterni, दूसरा scale जो है आपने horizontally रखना है और देखना है कि jugular pulsations आ रही हैं वो कितने सेंटीमीटर्स पे आ रही है. ठीक है, vertical scale के ऊपर. The upper level of pulsation in the internal jugular vein is basically same. So what are the causes of elevated jugular venous pressure? For example, it can be elevated in congestive cardiac failure, in tricuspid stenosis, tricuspid regurgitation, constrictive pericarditis, and cardiac tamponade. They can also fall in JVP can fall in conditions like hypovolemia and shock. For example, if the patient is having blood loss or due to diarrhea, is having low body volume, then there will be decrease or fall in the JVP. Okay, this is the topographic landmarks of the heart. We say precordial examination करना. So what is precordium? Basically, this is the part of the ventral surface of the body overlying heart and the stomach and comprising the epigastrium and the lower medial part of the thorax. ठीक है, ये area जो है, this is called precordium. ठीक है, ventral surface of the body overlying the heart, a little bit of the stomach, ये वाला area,
एंड ये इसको एपिगैस्ट्रियम भी कहते हैं, ठीक है ना. एंड द लोअर मीडियन पार्ट ऑफ द थोरिक्स, दिस इज कॉल्ड द प्रीकॉर्डियल एरिया. नाउ हाउ वी डू एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन एनी अदर एग्जामिनेशन जैसे रेस्पिरेटरी है, जीआईटी है, सब में आपको इंस्पेक्शन करनी होती है. So inspection is always best appreciated from the foot end, and you can also do it from the right side of the bed. So on inspection, what we can see, the precordial pulse can be seen to the left of the sternum with increased precordial activity, and it suggests cardiac enlargement. ठीक है, आपको एक bulging सी नजर आएगी अगर cardiac enlargement होगी. Or you can also see for any scars or abnormal pulsations, like scars of previous surgery. If the patient is having cyanotic heart disease and some procedure has been done, so there will be a scar of that surgery or abnormal pulsations आपको मिल सकती हैं. Okay. Now inspection पे और क्या क्या चीजें देखनी होती हैं. Asymmetry can indicate right ventricular enlargement. ठीक है, increase AP chest diameter indicate chronic air trapping or hyperinflation. So अगर increase AP diameter है, so it's not always indicate कि आज को कार्डियक इशू हुई है. एस्थमा के पेशेंट में भी इंक्रीज हो सकता है AP diameter. ठीक है. Factors deformity, that is pigeon chest for example, it usually has no significance cardiopulmonary point of view से. लेकिन अगर किसी को kyphoscoliosis है तो जो लंग की एक्सपेंशन है वो प्रॉपर नहीं होती और कार्डियक जो इश्यूज हैं इन पेशेंट्स को हो सकते हैं कार्डियोपल्मोनरी इफेक्ट्स. ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एपिकल इम्पल्स की या एपिक्स बीट की. ठीक है ना. सो नॉर्मली एपिक्स बीट जो है इट इज लोकेटेड एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट या इनसाइड द मिड क्लेविकुलर लाइन. ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल लोकेशन, लेकिन थोड़ी बहुत वेरिएशन डिफरेंट एज ग्रुप में हमें मिल सकते हैं, उनकी हम अभी बात करेंगे. एपिकल इम्पल्स एबनॉर्मल कब होगा? हाइपरडायनेमिक इम्पल्स इन नॉर्मल लोकेशन अगर है तो थिंक इंक्रीज कार्डियक आउटपुट या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. इसी तरह अगर हाइपरडायनेमिक है या डाउनवर्ड लेफ्टवर्डली डिस्प्लेस्ड है, थिंक अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकुलर enlargement. Indistinct impulse associated with right ventricular hypertrophy या precordial हीव आपको मिल सकती है in right ventricular enlargement. ठीक है. अच्छा, फ्रॉम थर्ड ईयर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ये ज्यादा है, बट अभी आपको ये पता होना बहुत जरूरी है फॉर थर्ड ईयर लेवल कि आपका जो एपिकल इम्पल्स है वो कहाँ लोकेटेड होता है. उसकी हम यहाँ पर भी हम बात करेंगे कि इन्फेंट अगर है तो आपको थोड़ा सा डेवलपमेंटल कंसिडरेशन करनी होती है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका चेस्ट का साइज भी बड़ा होता है, तो ये फोर्थ से फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आ जाती है, लेकिन इन्फेंट्स में आपको फोर्थ में मिलेगी. सो एपिकल इम्पल्स इज लोकेटेड एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस 1 to 2 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन. ये आपकी कैपिटल है और इसके इस तरफ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आपको फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में मिलेगी नॉर्मली इन इन्फेंट्स. ठीक है, यहाँ पे हम मजीद इसको क्लियर कर लेते हैं. Apical impulse refers to lowermost and outermost point of definite cardiac impulse, which gives maximum thrust to the palpating finger. यानी आपकी फिंगर को फील होगा. अब यहाँ देखें इंटेंसी में यही चीज रिपीट की हुई है. तो पोजीशन ऑफ एपिकल इम्पल्स आपको मिलेगा लेफ्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में और लेटरल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन. अप्रोक्स 5 ईयर ऑफ एज पे ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में आ जाएगा इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, और ओल्डर चिल्ड्रन में होगा तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही बट मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन. सो दीस आर डेवलपमेंटल कंसिडरेशंस. बेसिकली थोड़ी सी चेंजेस आती हैं जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है. और फिर एडल्ट्स में तो हमें पता है कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही मिलती है. अच्छा, दिस इज द वे ऑफ palpation of apical impulse. First of all, keep your whole hand over the precordium, जो अभी हमने देखा था. आप पहले precordium पर रखें, कार्डियक इम्पल्स को फील करें, palpation of impulse with hand, और जहाँ आपको फील हो जाए तो फिर उसको आप लोकेट करने की कोशिश करें. दैट इज एपिकल इम्पल्स विद फिंगर यहाँ लोकेट कर लिया. ठीक है, ओके. अब हम बात करेंगे पैल्पेशन की. सो पैल्पेट आपको करना है प्रीकॉर्डियम को किस किस चीज के लिए? फॉर थ्रिल. सो व्हाट इज थ्रिल? पैल्पेबल वाइब्रेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हार्ट साउंड, बेसिकली अ पैल्पेबल मर्मर. ठीक है, थ्रिल इज अ पैल्पेबल मर्मर एंड मर्मर इज एबनॉर्मल हार्ट साउंड एंड इट फील्स लाइक परिंग कैट. ठीक है, बिल्कुल कैट के फर की जैसी फीलिंग आती है हार्ट के ऊपर. और दूसरी चीज आपको पैल्पेशन में पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब्स मिल सकती हैं. दे आर स्क्रैची, हाई पिच्ड ग्रैटिंग साउंड्स similar to pleural friction rubs, except that they are not affected by changes in respiration. This is how we differentiate कि ये pericardial friction rub है या pleural friction rub है. अगर respiration के साथ कोई change नहीं हो रहा तो फिर वो pericardial होगी. On the other hand फिर वो pleural होगी. Diffuse impulse हो सकता है, इसमें lift या heave आपको मिल सकती है. ठीक है. Thrills, again these are palpable vibrations of murmurs which accompany any organic murmur of grade 3 and above. ठीक है, अगर आपको murmur ग्रेड 3 और अबव का मिलेगा तभी आपको थ्रिल मिलेगी. पैल्पेबल मर्मर आपको मिलेगा ही तब जब ग्रेड ऑफ मर्मर. अभी हम ग्रेड की बात करते हैं कि व्हाट आर द ग्रेड एंड हाउ मेनी ग्रेड्स ऑफ मर्मर आते हैं. ठीक है, तो ग्रेड 3 एंड अबव में आपको
जो है वो थ्रिल मिलेगी। अच्छा, अब हम पेरास्टर्नल हीव बेसिकली क्या होती है, पैल्पेबल थ्रस्ट होती है विच लिफ्ट्स अ पैल्पेटिंग हैंड एंड इट इज सीन इन राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। अब अगर हीव मिल रही है तो आपने देखना है कि वो इंस्टेंट लिफ्ट है, दैट इज विजिबल बट नॉट पैल्पेबल, या विजिबल और पैल्पेबल है, लिफ्ट भी होगी और आपको जो है वो मतलब इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। अच्छा, परकशन यूजुअली हार्ट बॉर्डर्स की एज सच नहीं की जाती है, ठीक है। हम आ जाते हैं ऑस्कल्टेशन पे। For third year level, you should know about these four auscultatory areas. कि normally हमें कौन कौन से auscultatory areas पे सुनना होता है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट साउंड्स पता होंगे तो फिर एबनॉर्मल समझ आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे S1 की। S1 is due to the closure of atrioventricular valves. S2 उसके बाद आता है, it is due to the closure of semilunar valves, that is aortic and pulmonary valve. अभी हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। S3 साउंड बेसिकली थ्योरेटिकली आप याद रख लें कि साउंड ऑफ रैपिड फिलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आपके लेवल पे S1 और S2 भी समझ आ जाए तो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। S4 एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है और इट्स नॉट नॉर्मली ऑडिबल, ठीक है। अच्छा, आप सुनेंगे कहाँ पर, आपको कहाँ कहाँ पे ऑस्कल्टेटरी एरियाज पे सुनना है, आपको एपिक्स पे सुनना है। एपिक्स कहाँ होती है, फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, दिस इज आल्सो कॉल्ड माइट्रल एरिया। So you have to listen for heart sounds in the apical area. Then lower left sternal border, that is the fourth intercostal space, fourth left intercostal space. This area is also called tricuspid area and secondary aortic area. The fourth area where one has to listen is the right middle sternal border, that is second right intercostal space. This is also called aortic area. The fourth area where one has to listen is left middle sternal border, that is second left intercostal pulmonary area, ठीक है। तो चार एरियाज आपको याद रखने हैं, माइट्रल एरिया, फिफ्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ट्राइकस्पिड एरिया, फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस, एओर्टिक एरिया, सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस, और पल्मोनरी एरिया, सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। दीज आर फोर ऑस्कल्टेटरी एरिया जो कि नॉर्मली सुने जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, यहाँ से स्टार्ट होंगे तो फिर डिफरेंट दूसरे एरिया भी आप समझ पाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जाहिर है अब हम जब मजीद सुनते हैं, अब आपको ये तो नॉर्मल पेशेंट में हो गया कि आपने नॉर्मली ये देखना है। अब अगर आपको मिल रहा है कोई मरमर वगैरह, तो जैसे हमने बात की थी कि मरमर की रेडिएशन बैक पे भी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट एरियाज हैं, उनमें आपको देखना होगा। लेफ्ट एंड राइट इंफ्रा क्लैविकुलर एरियाज हो गए, लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, राइट एंड लेफ्ट एक्सिली, ठीक है। ये बेसिकली रेडिएशन ऑफ मरमर चेक करने के लिए हम देख रहे होते हैं। इंटरस्कैपुलर एरिया, जैसे हमने भी बात की थी कि पल्मोनरी स्टेनोसिस का या कोऑपरेशन का जो मरमर है वो बैक स्प्लिट जाता है इंटरस्कैपुलर एरिया, तो वो उनमें आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम देखें अगेन द एओर्टिक एरिया, ठीक है ना। हमने कहा था कि सेकंड जो आपका इंटरकोस्टल स्पेस है, पल्मोनरी एरिया, उसके बाद आपका माइट्रल या एपिकल एरिया और ट्राइकुस्पिड एरिया, ठीक है। ओके, अगेन और हम अच्छी तरह से देख लेते हैं कि राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है एओर्टिक वाल्व की, लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है पल्मोनरी एरिया, पल्मोनरी वाल्व। फिर ये आपका अपाइकल एरिया आ गया है, दैट इज द लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लैविकुलर लाइन में, एपिकल एरिया, एंड देन द फोर्थ लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस ट्राइकुस्पिड एरिया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर पेशेंट में कार्डियक फेलियर के साइंस आ रहे हैं या और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लंग्स बेसिकली बेसल कैपिटेशन सुनने के लिए ऑस्कल्टेट किए जाते हैं। क्रेनियम पे आप ब्रूइज देखते हैं, ठीक है ना, टेम्पोरल ऑर्बिटल कॉन्टिनेंट में आपको ब्रूई मिल सकती है। कैरोटिड एरिया है, एब्डोमेन में एओर्टिक ब्रूई आपको मिल सकता है, ठीक है ना। इसी तरह रीनल एरियाज हैं, लाइक ये अभी थर्ड ईयर के लेवल पे नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। अच्छा जनाब, आपको देखना है S1 S2 समझना है। अब ये देखना है कि सिस्टोलिक साउंड आ रहा है, सिस्टोलिक मरमर आ रहे हैं, डायस्टोलिक साउंड है, डायस्टोलिक मरमर। उसका तरीकाकार ये है कि सिंपली आपने जो है वो S1 S2 के लिए अगर कैरोटिड के साथ आता है तो S1 है, उसके बाद जो है वो S2 की आवाज होती है, ठीक है ना। So begin with diaphragm end piece and use the following note. नोट आपने क्या क्या देखना होगा, अगेन ऑस्कल्टेशन में हार्ट रेट देखना होगा, हार्ट का रिदम देखना होगा कि रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है ना। और जैसे पल्स में हमने रिदम देख रहे थे ना, इसी तरह से यहाँ पर भी रिदम देखेंगे। फिर हम देखेंगे S1 और S2 ऑडिबल हैं, और अगर वो ऑडिबल हैं तो साथ में कोई एक्स्ट्रा हार्ट साउंड तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना, जैसे S3 S4। और फिर हमने मरमर को ऑस्कल्टेट करना है, ठीक है।
ओके, सो रेट जो हमने बात की ये रेगुलर है या इरेगुलर। रेगुलर में तो चलो ठीक है, आपको लुक लुक की साउंड सुनाई दे रही है, लेकिन अगर इरेगुलर है तो उसको फिर फर्दर देखना होता है कि ये साइनस एरिथमिया हो रहा है, दैट इज कॉमन वेरिएशन। हार्ट रेट इंक्रीज होगा ऑन इंस्पायरेशन एंड डिक्रीज ऑन एक्सपायरेशन, थोड़ी सी नॉर्मल वेरिएशन होती है। लेकिन अगर रेगुलरली इरेगुलर है या इरेगुलरली इरेगुलर है, इट्स मीन कि खुदा ना खास्ता कोई एरिथमिया तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, कोई कॉन्जेनाइटल एरिथमिया भी हो सकता है। तो ये आपको देखना होगा। उसमें हार्ट की जो आवाज है वो आपको रेगुलर नहीं आएगी, जैसे नॉर्मल लुक 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 आवाज आई, फिर पॉज आ जाएगा और उसके बाद फिर से आपको जो है वो हार्ट रेट सुनाई देगा, तो वो इरेगुलर हार्ट रेट होगा। ठीक है, पल्स डेफिसिट बेसिकली क्या कहते हैं कि सम ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम विल नॉट बी ट्रांसमिटेड। ठीक है, जैसे इन केसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन या हार्ट फेलियर में क्या होगा कि आपको बड़ा वीक हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और वो इतनी कम होंगी कि पल्स जनरेट ही नहीं हो पाएगी, तो आपको पल्स डेफिसिट मिलेगा। एक पल्स आई, उसके बाद नहीं आई, फिर आई, फिर नहीं आई, तो ये पल्स डेफिसिट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, दिस नॉर्मल हार्ट साउंड लुक्स लाइक लुक टू। ठीक है, अच्छा, S1 जो है it may be due to acceleration deceleration phenomenon in the left ventricle near the AV valves, is best heard at the apex and left lower sternal border, that is mitral area पे या tricuspid area पे आपको S1 बहुत अच्छा सुनाई देगा। Often sound single unless slow heart rate। ठीक है, tends to be more low pace and long as compared to S2। और आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड को और सेकंड हार्ट साउंड को, जैसे हमने कहा कि हम कैरोटिड को पैल्पेट करेंगे। S1 comes before and S2 comes after the carotid after stroke। ठीक है, these are the causes of decrease या light S1, slow ventricular ejection rate, mitral insufficiency, increased chest wall thickness, pericardial effusion and hypothyroidism। इसमें आपको S1 कम सुनाई देगा। ठीक है ना, कार्डियोमायोपैथी, ठीक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, शॉक, एओर्टिक इनसफिशिएंसी, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, इनमें आपको S1 कम सुनाई देगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे S2 की। S2 इज बेसिकली ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वैल्व्स एंड इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एओर्टिक कंपोनेंट एंड द पल्मोनरी कंपोनेंट। और ये आपको बेस्ट कहाँ सुनाई देगा, आपका जो लेफ्ट मीडियल स्टर्नल बॉर्डर या सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस है पल्मोनरी एरिया की, वहां आपको ये बेहतर सुनाई देगा। ठीक है, और अभी स्प्लिटिंग को हम छोड़ देते हैं बिकॉज S3 जो है वो गैलप रिदम कहलाता है, लो पिच्ड साउंड होते हैं। ठीक है ना, इट अकर्स विद रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स इन अर्ली डायस्टोली एंड ड्यू टू सडन इंस्ट्रिंसिक लिमिटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल, तो प्रॉपर फिलिंग हार्ट की नहीं हो पाती और कार्डिक फेलियर के अंदर, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में, एनीमिक फेलियर में आपको गैलप रिदम सुनाई देता है। ठीक है ना, यानी टैकीकार्डिया होगा और साथ में इस तरह की आवाज होती है जैसे घोड़े की भागने की आवाज होती है। Best heard with patient in supine or in left lateral decubitus position, increased by exercise, abdominal pressure, or lifting legs, and left ventricular S3 heard at the apex and right ventricular S3 heard at the left lower sternal border। ठीक है, और जो S4 का गैलप है ये तो नियरली ऑलवेज पैथोलॉजिकली होता है। ठीक है, और एक्सेप्ट इन एल्डरली एंड एथलीट्स, लो पिच साउंड होगा एंड ड्यू टू एलिवेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, पुअर कंप्लायंस की वजह से होगा। ठीक है, और ये भी आपको एपेक्स पे अच्छा सुनाई देता है। अच्छा, एसोसिएशन क्या है S4 की ट्राइकस्पिड एट्रीजिया में, कॉन्जेनाइटल हार्ट ब्लॉक्स में, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न, पॉक्टेशन ऑफ एओर्टा या कावासाकी डिजीज या एओर्टिक स्टेनोसिस विद सीवियर एलवी डिजीज, इन सब में आपको मिल सकता है। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट मर्मर। मर्मर और एबनॉर्मल हार्ट साउंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ठीक है, अब अगर आपको कोई एबनॉर्मल हार्ट साउंड मिल रहा है तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, उस मर्मर की लोकेशन देखनी है, उसकी रेडिएशन देखनी है, whether it is audible at particular area या it is radiating towards certain area, intensity, whether it is of low intensity or high, what is the quality of murmur, relationship with cardiac cycle, and whether मतलब systolic में मिल रहा है या diastolic में मिल रहा है, and change on position, क्या आपने पेशेंट को उठा बिठा के देखना है कि उसमें उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रही है। एंड वन मोर थिंग, चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ द मर्मर विद रेस्पिरेशन, जो आपके ट्राइकस्पिड के मर्मर्स होते हैं ये यूजुअली इंक्रीज हो जाते हैं इंस्पायरेशन में, और आपका जो माइट्रल है या लेफ्ट साइडेड मर्मर है ये इंक्रीज हो जाते हैं एक्सपायरेशन में। ठीक है, सो मर्मर्स ऑफ चाइल्डहुड कैन बी इनोसेंट और ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक मतलब पैथोलॉजिकल, और इनोसेंट मर्मर होता है दे आर ऑफ नो सिग्निफिकेंस। अब बात करेंगे हम ग्रेड्स ऑफ मर्मर की। देयर आर 6 ग्रेड्स ऑफ मर्मर। द फर्स्ट ग्रेड इज अ मर्मर व्हिच इज ऑफ वेरी low intensity, very soft murmur, and it is heard with very difficulty.
ठीक है, बहुत ही कोई एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट हो तो सुन सकते हैं। लेकिन ग्रेड 2 का मर्मर सॉफ्ट होगा बट इट इज इजीली ऑडिबल एंड एनीवन कैन हियर a murmur of grade 2 in a quiet room. Then comes the murmur of grade 3. अब grade 3 से जो ना loud murmur स्टार्ट हो, ये आप याद रखें, ये loud murmur होगा without thrill, यानी palpable नहीं होगा। जब कहा था ना कि thrill is a palpable murmur, so murmur of grade 3 will be loud but without thrill. Grade 4 murmur will be loud with thrill. Grade 5 murmur will be loud with thrill and audible with the edge of the, इतना उसकी इंटेंसिटी होगी जस्ट आप एज ऑफ द स्टेथोस्कोप से भी आपको सुनाई दे देगा, ठीक है, इतना लाउड होगा। और ग्रेड 6 का मर्मर तो कहा जाता है कि विदाउट स्टेथोस्कोप भी सुना जाता है, ठीक है। सो दीज आर द 6 ग्रेड, बस ये याद रखेंगे ग्रेड 3 से लाउड स्टार्ट हो रही, 3 इज लाउड विदाउट थ्रिल, 4 लाउड विद थ्रिल एंड देन वेरी वेरी लाउड विच इज ऑडिबल। इसको लोकलाइज करना मुश्किल होगा ग्रेड 5 को कि कौन से एरिया में मैक्सिमम इंटेंसिटी, सब ऑल ओवर द प्रीकॉर्डियम आपको एक जैसा सुनाई देगा, इतना लाउड होगा। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट मर्मर्स क्या होते हैं? अब हमको ये डिफरेंशिएट करना होता है कि ये पैथोलॉजिकल मर्मर है, किसी कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से है, या ये इन्वेस्टमेंट मर्मर है और उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। सो 40 to 45% ऑफ मर्मर्स ऑफ चाइल्डहुड आर इनोसेंट एंड बेसिकली कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होती, बस एक मर्मर सुनाई दे रहा होता है और उसमें आपको थ्रिल भी कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हर्ड ओवर द लोकल एरिया एंड डज नॉट रेडिएट। कभी भी इन्वेस्टमेंट मर्मर जो है ना वो कभी भी रेडिएट नहीं करेगा आउटसाइड ऑफ प्रीकॉर्डियम, ठीक है। ऑफ अ शॉर्ट लो फ्रीक्वेंसी, इट अकर्स इन अर्ली और मिड डायस्टोली एंड नेवर डायस्टोली, ठीक है। अगर कोई मर्मर डायस्टोली में आता है तो इट इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। अच्छा, शो वेरिएशन इन इंटेंसिटी विद चेंजेस इन पोस्चर, सिटिंग और डीप इंस्पिरेशन मेक्स मर्मर क्वाइट आउट, ठीक है। तो आप जब इस तरह से पोजीशन वगैरह चेंज करेंगे हो सकता है मर्मर गायब भी हो जाए। इंक्रीज होगा विद टैकीकार्डिया, क्राइंग, एंजाइटी और चाइल्ड बेसिकली एसिम्प्टोमेटिक होगा। पैथोलॉजिकल मर्मर में हमेशा पेशेंट सिम्प्टोमेटिक होता है, यानी इसको कार्डियक फेलियर के साइंस भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसको साइनोसिस भी हो सकता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को साइनोसिस हो, लाइक एसाइनोटिक हार्ट डिजीज में भी मर्मर मिलते हैं, जैसे बीएसडी फॉर एग्जांपल एसाइनोटिक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि सिम्प्टोमेटिक होगा पेशेंट, जबकि पैथोलॉजिकल मर्मर होगा। इनिशियल मर्मर में पेशेंट का सब हेल्दी और प्लेफुल होगा और एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होगी कि मर्मर आ रहा है इसको, ठीक है ना। आप उठा बिठा के देखेंगे मर्मर गायब हो रहा है और इस तरह से रेडिएशन उसकी कोई नहीं है, तो फिर आप इनोसेंट उसको पाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं मर्मर्स जो पैथोलॉजिकल हैं, तो उनकी क्या फर्दर कैटेगराइजेशन होती है या क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू देयर टाइमिंग विद इन द कार्डियक साइकिल। थर्ड ईयर लेवल के लिए इतना जरूरी है समझना कि सिस्टलिक पता हो व्हेन द मर्मर इज अकरिंग बिटवीन S1 एंड S2 एंड डायस्टलिक व्हेन द मर्मर इज अकरिंग बिटवीन S2 एंड S1, ठीक है। फिर आपने जब ये देख लिया कि सिस्टलिक है या डायस्टलिक है, तो फिर फर्दर हमें पता चल जाता है कि इजेक्शन सिस्टोलिक है या पैन सिस्टोलिक है। पैन इजेक्शन सिस्टोलिक मतलब अर्ली सिस्टोली में सुनाई देगा, पैन सिस्टोलिक थ्रू आउट द सिस्टोली सुनाई देगा, पैन डायस्टोलिक और पोलो डायस्टोलिक में थ्रू आउट द डायस्टोली सुनाई देगा, ठीक है। प्रो डायस्टोलिक अर्ली डायस्टोलिक होगा, प्री सिस्टोलिक लेट डायस्टोलिक होगा, ठीक है ना। और कंटिन्यूअस मर्मर आपको मिलेगा थ्रू आउट द सिस्टोली एंड डायस्टोली, सही है, ओके। कुछ पैथोगनोमिक मर्मर्स होते हैं जैसे पैन सिस्टोलिक मर्मर, बच्चों में बीएसडी का मर्मर पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है ना। कंटिन्यूअस मर्मर आपको पीडीए में मिल जाता है, माइट्रल स्टेनोसिस में आपको मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर की इन्होंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दी है। तो यहाँ ये इजेक्शन सिस्टोलिक है, शुरू में मिल रहा है आपको, सिस्ट लेके आया, इसकी फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है। आयोटिक स्टेनोसिस का मर्मर है, मर्मर फॉलोज इजेक्शन क्लिक एंड एंड्स बिफोर A2, ठीक है। यहाँ पर आके बिल्कुल फेंट हो गया। अच्छा, ऑन द अदर हैंड पल्मोनरी स्टेनोसिस का मर्मर आप देखें कि मर्मर फॉलोज इजेक्शन क्लिक एंड एंड बिफोर डिलेड P2, ये यहाँ तक आ रहा है, ये इधर ही खत्म हो गया था, ये यहाँ तक आ रहा है, तो दोनों इजेक्शन सिस्टोलिक होंगे, ठीक है। पैन सिस्टोलिक मर्मर जैसे कि हमने कहा कि थ्रू आउट दी सिस्टोली आपको सुनाई देगा, और पैन सिस्टोलिक मर्मर जो कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं उनमें से बीएसडी में मिलता है। बाकी एक्वायर्ड में ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है, माइट्रल रिगर्जिटेशन है, जैसे किसी को रूमेटिक फीवर हो गया और उसके बाद उसको जो है माइट्रल रिगर्जिटेशन हो रही है, तो आपको एपिकल एरिया में हॉलो सिस्टोलिक मर्मर या पैन सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, ठीक है। कार्डियक फेलियर में आपको टीआर मिल सकता है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बीएसडी का मर्मर आपको लेफ्ट लोअर एक्सटर्नल बॉर्डर में मिलेगा, पैन सिस्टोलिक। अच्छा जी, क्वेश्चन आपके हैं तो आप जो है आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
Can't he deliver lecture in Urdu? I think mix ही use किया मैंने और आपके कुछ questions हैं तो आप पूछ सकते हैं. Unfortunately देखिए ideally it has to be on the bedside ना patient के ऊपर हम examination करवाएं तो वो best होता है लेकिन आप मजबूरी है तो अल्लाह करे जिसको भी emergency end हो जाए तो हम आपको bedside पे भी करवाते हैं ठीक है ना लेकिन आपके कोई question है तो आप पूछ लीजिए. If there are no questions, then we can end the lecture.